on Health for All is on brain tumor diagnosis and management. A brain tumor is a mass of growth of abnormal cells in your brain. Many different types of brain tumors exist. Some brain tumors are benign or non-cancerous, while some are malignant and or cancerous. To speak about on this, Sonia Lal Gupta, the Director, Metro Group of Hospitals in Delhi. She's a US board certified neurologist with fellowship in headache medicine and vascular neurology. She graduated in 2011, becoming the youngest neurologist in the world at the age of 27. Thank you, sir. मेरा पहला सवाल डॉक्टर अमिताभ गुप्ता से है. डॉक्टर गुप्ता, हमारे दर्शकों को कुछ ब्रेन ट्यूमर के बेसिक्स के बारे में बताइए. ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि ज्यादातर मामले में देखा गया है कि मरीज को जब पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है. तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे वो समझे कि ये ब्रेन ट्यूमर ही है. आप अनम्यूट कर लिए सर. आमतौर पे ब्रेन ट्यूमर जो हम मानते हैं वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ है जो दिमाग में जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं हैं और सेल्स हैं, वो अपने आप में अनकंट्रोल बढ़ती जाती हैं, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा. तो इनके सिम्टम्स जो हमारे दिमाग में होते हैं वो मुख्य 3 या 4 हैं, जिनको हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए. और इसकी वजह ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है, ये जो हमारे स्कल या खोपड़ी है उसके अंदर बंद है. तो ये एक तरीके से अपने एक छोटे से डिब्बे में बंद है. तो इसमें अगर कोई भी चीज बढ़ती या घटती है, उसी के अनुसार हमें उसके सिम्टम्स भी आते हैं. खास तौर पे सुबह उठ के भारी दर्द रहना या नींद खुल जाना दर्द के कारण, उसके साथ साथ उल्टी होना, उल्टी के बाद दर्द में कमी आना, और जो इसके अन्य सिम्टम्स में खास जो है वो है कि मिर्गी के दौरे पड़ना. मिर्गी का दौरा हालांकि ब्रेन के ट्यूमर की वजह से हार्डली 1 to 5% में होता है, पर ये ऐसी चीज है जिसको हम डायग्नोज करके ट्रीट कर सकते हैं. मतलब ये ट्रीटेबल मिर्गी का कारण हो सकता है. इसके साथ साथ आपको हाथ या पैर में कमजोरी आना, क्योंकि ये किसी भाग में, जिस भाग में ये ट्यूमर होता है उसके अनुसार ही हमें इसके लक्षण दिखते हैं. तो अगर ये उस भाग में है जिसमें हाथ या पैर का नियंत्रण है, तो आपको उसकी कमजोरी या फिर उसमें सुन्नपन महसूस होना, या फिर आपको चलने में दिक्कत होना, या आमतौर पे और कुछ नहीं तो सिर्फ चक्कर आना भी एक सिम्टम हो सकता है. तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आप नजरअंदाज कर सकते हैं अगर ये कम है, या फिर 1 या 2 दिन के लिए है. पर ये अगर लगातार होते रहें और आप इनसे परेशान हैं, तो मेरी यही आपसे सलाह है कि आप तुरंत ही पास के अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए, उसकी सलाह लें और उसी हिसाब से फिर आगे इसको ट्रीट कराएं, या इमेजिंग करा के जो हमें इसका रिपोर्ट मिलती है उसके हिसाब से हम इसको ट्रीट करें. डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया, नॉर्मल ब्रेन सेल्स में क्या चेंजेस होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर की ओर ले जाते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, ये अनियंत्रित जो आपके सेल होते हैं या जिससे आपकी कोशिकाएं बनती हैं, उनका ये एकदम से बढ़ जाना, तो जो ये कारण है ये जेनेटिक होते हैं. अब मुख्य लोगों में तो ये जेनेटिक का एक ना एक कंपोनेंट किसी ना किसी में मिलता है. साथ में जैसे हम रेडिएशन बोलते हैं या फिर बिजली की सिकाई, ये भी एक कारण होता है. इसी के साथ साथ स्मोकिंग, या फिर आप जो केमिकल्स होते हैं जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह में देखते हैं, ये भी उसका एक संयोजक कारण हो सकता है. पर मुख्य तौर पे अधिकतर ब्रेन ट्यूमर्स का कंपोनेंट जो होता है वो जेनेटिक है. तो क्या मतलब सेल्स के डीएनए में भी कोई चेंजेस आते हैं? जी हाँ. तो ये 2 तरीके होते हैं. एक तो हम फैमिलियल कहें या पारिवारिक, कि पारिवारिक वो ट्यूमर हो सकता है अगर वो आपकी जीन आपके माता पिता या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिली हो, या फिर आप ही में ये ट्यूमर डेवलप हो सकता है क्योंकि आपके बर्थ के बाद या आपके पैदा होने के समय या उसके बाद जो आपके डीएनए में चेंजेस आए हैं वो इसका कारण बन सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर साहब. हम आपके पास फिर लौटेंगे सेकेंड राउंड में. डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, आप अनम्यूट कर लें. लगातार, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार सिर दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
सिर दर्द के मामले में आप तो वैसे भी विशेषज्ञ रही हैं, पहले भी हम आपसे बात करते रहे। ये सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर वाले सिर दर्द से अलग कैसे होता है? कैसे हम मरीज कैसे समझ पाए कि ये मामूली सिर दर्द नहीं है? किशोर जी, ये बहुत जरूरी सवाल है। पहली चीज है कि जब सिर दर्द होता है तो एज अ डॉक्टर हम सवाल पूछते हैं कि किस तरह का सिर दर्द है, उसके साथ क्या क्या सिम्टम्स हैं। लेकिन जैसे कि कोई हो जिसको कभी पहले इतना सिर दर्द ना हुआ हो या इतना सिर दर्द ना, और एकदम अब सडनली ज्यादा सिर दर्द होने लग जाए, ब्लरी विजन या देखने में थोड़ी सी मतलब विजन बिल्कुल क्लियर ना हो, उल्टी आना, या जब खांसते हैं तो सिर दर्द का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि शायद प्रेशर ब्रेन के अंदर बढ़ रहा है। जैसे डॉक्टर अमिताभ गुप्ता ने कहा, हमारा ब्रेन एक डब्बे की तरह है, एक क्लोज डब्बे की तरह जो बहुत टाइटली क्लोज्ड है, जो खुल नहीं सकता। तो अगर उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो दर्द होगा। तो वो जब हम प्रेशर बढ़ता है तो उस तरह का सिर दर्द में तो लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर हेडेक के साथ ब्लरी विजन हो रही है, अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग हो रही है, खांसी करने पर एकदम सिर दर्द ज्यादा हो रहा है, प्रेशर देने पर सिर दर्द ज्यादा हो रहा है, तो उनको जाके डॉक्टर से डेफिनेटली बात करनी चाहिए। या कभी किसी को सिर दर्द हुआ ही नहीं एंड सडनली अब उनको सिर दर्द रहने लग गया है, वो भी एक साइन हो सकता है कि हो सकता है कुछ अंडरलाइन हमें रूल आउट करना जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले डॉक्टर हिस्ट्री लेगा एंड उसके बाद वो डिटर्मिन करेगा, एमआरआई करके रूल आउट किया जा सकता है, एमआरआई ब्रेन करके, कि कुछ ट्यूमर है या नहीं। आपने जैसे बताया कि लॉस ऑफ विजन होने लगता है, क्या लॉस ऑफ स्मेल भी होता है? लॉस ऑफ स्मेल डिपेंडिंग ऑन क्या लोकेशन है। अगर हेडेक जिस तरीके की जहाँ पे ट्यूमर की लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली, अगर वो इस एरिया के पास है जहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, जो नर्व जहाँ से हमारी स्मेल आती है, तो लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकता है। अगर वो उस जगह के पास है जहाँ पे हमारी विजन की नर्व्स हैं तो ब्लरी विजन या लॉस ऑफ विजन होगा। अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रेशर बहुत पड़ रहा है तो फिर अलग तरह का सिम्टम होगा। तो उस पर डिपेंड करता है। कॉमनैलिटी होती है कि हेडेक हो रहा है और प्रेशर से रिलेटेड है। डॉक्टर सोनिया, एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या माइग्रेन पेन आगे चलकर ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन है ही नहीं। माइग्रेन कंप्लीटली एक डिफरेंट एंटिटी है, एक तरीके से न्यूरोकेमिकल एंटिटी है, जबकि ब्रेन ट्यूमर अनकंट्रोल्ड सेल्स, जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ रहे होते हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और कोई कनेक्शन नहीं। Thank you, Dr. Sonia. Welcome, Dr. Sonia. Wonderful having you again on our platform. Dr. Sonia, artificial intelligence-powered detection tool, which uses differential scanning fluorometry of blood samples, has shown to detect glioblastoma in patients with a 92% accuracy. As such technology advances, blood markers may feasibly be used to risk stratifying brain tumor patients and guide management. What is your comment on this? Thank you for having me, Shankarji. Great to see you again. And this is a very interesting question because there's a term called liquid biopsy, where basically now people are taking blood samples, and the theory is that can we diagnose the tendency, if the tumor is actually coming, and we can diagnose the tumor. Now this is something very early. It's, I think, in very early stages. Artificial intelligence will play a role, no doubt. And I think, as Dr. Amitabh Gupta rightly said, as we go forward, definitely it's going to be a very big tool that we all are going to use. At this time, I think when we see a lot of things come into the diagnosis, when we see the symptoms, we see the MRI, we see the location. A lot of clinical features that we see even on the MRI can help give an idea. But at the end of the day, it's going to be biopsy. Now, if we will have the tools that can help determine it, yes, it's going to be very useful. So there are, I think, studies going on at this time. And in the US, I know, and in Europe, a lot of places are using it, where they're using it to determine, the diagnosis. But glioblastoma is a big diagnosis, no doubt. So I think going forward, these tools are going to be very useful. And let's see when they happen. I mean, when they come on and when we can actually use it. Because I always think when it comes to India, something even as
simple as focused ultrasound we still don't have. There are a lot of technologies that come later on in India. So when we actually have the availability, when we as physicians, we start using them, then our experience is different. Then we'll see how the response is in India. A lot of the countries where they do these studies, they're based on Caucasian populations, they're different kind of cultures, populations. And so I think when the technology comes to India, when we actively start using it more frequently, depending on the cost and everything else, we'll have more data on how it can help our patients. Yeah, but as you say, probably as we emerge, but India has got an advantage because this is all basically building algorithms and also sort of machine learning, where you need computational technology, and we have an advantage there. Probably we might catch up, we might leapfrog from what the technology has been from the West, and we have a lot of these startups who are doing wonderful work in AI Absolutely. and healthcare. Now, my next question is, can you use artificial, headaches are of many types, you have migraine, you have this headache, that. Can you use artificial intelligence to grade headaches? So pain is something that is very difficult to grade because right now we don't have anything that can measure pain. I think so. First thing is, when somebody has a headache, what is the intensity of the headache the person is having? I think based on artificial intelligence, we can put in algorithms. I'll give you an example, right? Like, let's take a migraine. Now, if we were to put in algorithms that if somebody has a headache, is it unilateral, bilateral? What type of the headache is it? Is it throbbing? Is it a dull headache? Then based on that, is there nausea present? Do they have vomiting as well? Is there light sensitivity, noise sensitivity present? How long does the headache last? So based on multiple symptoms and clinical features of the headache, we can make algorithms that can probably help identify maybe the type of headache. But there's a lot more than goes into headaches. It was so easy just to identify the type, because when it comes to management of the headache, I think my colleagues will agree, it's such a multidisciplinary approach, because a lot of times there could be an underlying issue as well, like mental health issues, something very simple as anxiety, depression, if we take, or even maybe uncontrolled high blood pressure. At times, those simple things also contribute to the headache. So I think algorithms, artificial intelligence, I always believe, will always be a tool, but can never take off. And I also believe that they cannot be a replacement for the clinical examination and history of a patient. The doctor-patient bond and relationship is so important. And I think that's what because what makes me scared for the younger generation, I'll be honest, Dr. Shankar, is that if they are not going to do a clinical exam, if they're not going to do a proper history, which we see sometimes now, that the history-taking skills are not as strong as they used to be when we were younger, you cannot, you cannot treat that patient. End of the day, we're dealing with lives. So always we have to use, I think, artificial intelligence will always be a tool, but it can never replace our own thinking power and our evaluation, because it's not generalized medicine. In actual reality, it's always personalized medicine. I think every patient we see, it's a personalized approach. No, I completely agree with you, because you cannot leave everything to a machine, and probably you need. Yeah. I think ultimately artificial intelligence is being used to supplement or help the diagnosis to the doctors. But there is also a small problem that, as you say, people forget clinical examination and probably leave everything to a machine, saying that, yes, you have built an algorithm, so just put it through and we will see what is the result. That might happen, but probably that's a very dangerous trend of AI. Now, when some patient comes to you with a headache, at what point of time will you suspect brain tumor? So there's certain features in the headache. So again, it comes down to the clinical history. When somebody comes with a headache and they start describing, that, okay, I'm having blurry vision with it. When I cough. So again, let's put it this way, our skull, it's a box. So now actually brain is a painless organ. There isn't any, so it is different entities that actually causes pain. So one part is increasing pressure in it. So if somebody comes in, they say, I'm having blurry vision, I'm having uncontrolled vomiting, when I get up in the morning, early morning headaches or night headaches, that could be a clue, because when they're lying down, change in position, that is causing an increase in headaches, which is due to the change in intracranial pressure. So these kind of symptoms can give us a clue that can this be something more?
than just a regular headache, and let's get an MRI done. Another important thing for our viewers to know is, let's say somebody is a person who has headaches. They regularly have migraines. Now, how will they identify? So that's where they have to pay close attention to what their usual headaches are and how is this headache different. What we also see many a times is sometimes this purely headache alone is not there. When you go into the clinical history, there might be subtle symptoms or features, that you see along with it, depending on the location of what is there. Like, for example, there was a mention, if it's a pituitary gland tumor, they might have a headache, they might have blurry vision, and they might have hormonal changes, which can give us a clue as well. So it all comes down, to exactly taking the history and asking important questions of blurry vision, change in position, early morning headaches, which can give us a clue. Thank you. Dr. Sonia, what exactly is the research that excites you so far as headaches are concerned? Of course, we all should not get headache, but what is exactly that excites you regarding headache research? Help me find something that will cure the headache. There is no cure. The first question every patient wants to know is, ये headache चले जाएगा ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा? And our answer always is, we can control it, we can manage it, but we cannot completely, remove it or cure it. So I think in neurology in general, there are so many things, but that where we wish we could just have the treatment where we can actually get that satisfaction of curing it. So I think if at the day we can find a way to, just say, okay, you take this and the headache is gone and you're absolutely fine, I think that would be the day. I think that I would be very happy at that on that day. I think only a magic wand can do that. That is far away. Absolutely. But otherwise, there's a lot of research going on in terms of, I think, different medications, and CGRP antagonist, a particular type of medication for migraines. I'm waiting that once it comes to India, I think Dr. Soumya will also, I think, agree with me that we're waiting that it comes to India. We can offer that to our patient because the data coming out for that is overall good, and we are seeing good results. And my colleagues who are using it in the US and other countries, they're seeing good results with it as well. So we're just waiting that, let it come to India. Let's give an option, where we can at least help our patients out in some way when nothing else is working. Well, Dr. Soumya, you want to add anything to that? Any research to end headache is good. Being a migraine myself, I can definitely, feel it. It's a bad thing to have. Yeah, I think we are all fortunate that we are not having much of headache, except that when we have some heavy pressure of work, we say, yes, it is a headache. Or we meet someone whom we don't like, we say, yes, he's an headache. Otherwise, we don't think that we have that headache. But then, as all of you have said, headache is of course, a major problem. Brain tumor is a major problem. Thank you very much, my wonderful panelists, having you all with us, and such a wonderful session on a wonderful organ, which is still a mystery. I think that's exactly how the brain is. And one day, probably, we have insights into various planets, into solar systems, into black holes, into this and that. But the human brain still continues to be a very, very mysterious organ. I think that is something that is created by someone who we don't know. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Over to you, Kishore. Thank you, sir.